morning, respected teachers and my dear friends. A very warm welcome to everyone present here at our Grade 6 Assembly. Today's assembly is based on the theme Second Languages, where we celebrate how languages help us connect, communicate, and understand different cultures. Through today's performances, you'll see how students are exploring languages in creative and meaningful ways. We hope you enjoy this journey along with these languages. Before we begin, we request everyone to kindly stand for the school anthem. Now it's time for Learning Lights, where our students will showcase their learning in different languages. Let's welcome the first language learner. हम कोई कहानी नहीं सच्चाई सुनाने आए हैं। हम कोई कहानी नहीं सच्चाई सुनाने आए हैं। नमस्ते दोस्तों, हम हैं छोटे पर हमारी सोच बड़ी है। आज हम कचरा प्रबंधन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, वही कचरा जिसे हम रोज देखते हैं पर समझते नहीं है। कचरा मतलब बस गंदगी ना? नहीं भाई नहीं, कचरे के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। 3 सुपरस्टार, गीला कचरा, सूखा कचरा और ई वेस्ट। समझो गीला कचरा यानी कि बचा हुआ खाना, फल के बीज और सब्जियों के छिलके। सूखा कचरा यानी प्लास्टिक, कागज, बोतलें और डिब्बे। तीसरा टाइप है ई वेस्ट, जैसे कि पुराने मोबाइल, टूटे हुए चार्जर या खराब बैटरी। अगर हम इन्हें अलग अलग नहीं करेंगे तो धरती माँ को नुकसान ही नुकसान होगा। तो आज हम आपको दिखाएंगे कैसे छोटी सी आदत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होगा सफाई का असली सबक।
अरे यह क्या है? यह प्लास्टिक है। प्लास्टिक तो जानवर के लिए खतरनाक है। आप कौन है ये बोलने वाले? चलो चलो हटो। मैं मायशा हूँ, इस धरती की रहने वाली। और क्यों आप यह प्लास्टिक फेंक रहे हो? इसको पूछने के लिए मेरा हक है। मैं भी मानती हूँ प्लास्टिक हानिकारक है। देखो, कोई जानवर मर भी सकता है। दुनिया में कितने जानवर हैं? एक मर गया तो क्या? ये जहर है, जहर। कचरा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट का नाम सुना है कभी? पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट का सुरक्षा हमारे हाथ। अरे यह किसका बकरी है? यह प्लास्टिक खा रहा है, यह मर जाएगा। अरे मेरा बकरी है, इसे बचाओ बचाओ। देखो, जब आपका बकरी खतरनाक में मुसीबत में है तब आपको पता चला। मैं समझ गया, मुझे माफ करो। देखो नाटक देखो, नुक्कड़ वाला नाटक देखो। देखो देखो नाटक देखो, नुक्कड़ वाला नाटक देखो। अरे आप कहाँ जा रहे हो? मैं कचरा फेंकने। तुम? मैं भी। आपके पास तीन पैकेट क्यों है? क्योंकि मम्मी कचरा अलग अलग रखा हुआ है। तुम्हारे में कागज, छिलके और एक फोन भी। ये धरती के लिए बहुत हानिकारक है। हाँ, पर मैं एक साथ क्यों नहीं फेंक सकता? गीला कचरा कंपोस्ट में बदल जाता है। रेड्यूस कम उपयोग करें, रीयूज दोबारा उपयोग करें, रिसाइकल पुनर्चक्रण करें। आज 3 मंत्र अपनाओ, धरती को बचाओ। 3 मंत्र अपनाओ, धरती को बचाओ। एक छोटा सा प्रयास बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर हम सब साथ में मिलकर कचरे को सही जगह डालें तो हम हमारा देश और स्कूल स्वच्छ बना सकते हैं। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। कचरा डिब्बे में डालो, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। आज का हमारा संदेश, स्वच्छता है सबसे विशेष। आज का हमारा संदेश, स्वच्छता है सबसे विशेष। देखो देखो नाटक देखो, नुक्कड़ वाला नाटक देखो। देखो देखो नाटक देखो, नुक्कड़ वाला नाटक देखो। Thank you, Hindi learners, for spreading this awareness about how to protect Mother Nature. Next, we'll have the French learners presenting a medley of songs, presenting their learning through the beautiful medium of music. What is here is a 2019 song by a singer from Belgium. The song's name literally translates to I Want Your Eyes. It stands out as one of Angel's top tracks and has played a significant role in defining a contemporary pop music. I personally feel that the light and airy tone of this song is something all of y'all will truly enjoy.
Jamade Meshao is a traditional folk song which was composed in Western France in 1976, and it's about a male and a female horse eating hay. We will be singing the version by Noel or Leroy, which was made re-edited in 2010. L'école est finie is a song composed by Sheila in 1963, and it translates to school is over, and we're going to be singing that now. Thank you, French students, for the soothing songs and the fantastic French culture that you showed. Following that, the Tamil students will present a short role play on environmental issues and pollution, along with meaningful solutions and awareness slogans. Today, we'll be presenting a play in which the nature talks about how it's affected by pollution, and the students overhear it and say that they'll make a change. எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் தமிழ் வகுப்பில் சுற்றுப்புற சூழல் பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இப்போ அதை பற்றி ஒரு நாடகம் நடித்து காட்டப் போகிறோம். கதாபாத்திரங்கள் மரமாக வருண், நதியாக ஓவியா, காற்றாக சாய், மாணவர்களாக தீக்ஷா மற்றும் ரேயான். வணக்கம், நான் தான் மரம் பேசுகிறேன். நான் விலங்குகளுக்கு வீடுகள் தருகிறேன், மனிதர்களுக்கு பழங்கள் மற்றும் உணவு தருகிறேன், எல்லோருக்கும் ஆக்சிஜன் தருகிறேன். இவ்வளவு உதவி செய்தும் இந்த மனிதர்கள் என்னை வெட்டுகிறார்கள் மற்றும் வருத்தப்பட செய்கிறார்கள். இவர்கள் எப்பதான் திருந்துவார்களோ? நான் தான் நதி. ஆமாம் மரம், நீ சொல்வது சரிதான். இந்த மனிதர்கள் நம்மை மாசுபடுத்துகிறார்கள். நான் அனைவருக்கும் குடிநீர் வழங்குகிறேன் மற்றும் வயல்களுக்கு நீர் அளிக்கிறேன். ஆனால் இந்த மக்கள் என் மேல் குப்பைகள் மற்றும் கழிவுகளை விடுகிறார்கள். நான் என்னதான் செய்வதோ? நீங்கள் இருவரும் சொல்வது மிகவும் சரிதான். நான் காற்று, நான் எல்லாருக்கும் சுவாசிக்க உதவுகிறேன். ஆனால் வாகனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வரும் புகை மிகவும் மாசுபடுத்துகிறது. நம்மளால் என்னதான் செய்ய முடியுமோ? நாம் இயற்கையை பாதித்து விட்டோம். இனி நாமே மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும். நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள். நாங்கள் மரங்களை நடுவோம், குப்பைகளை கீழே போட மாட்டோம், நம் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்போம். பூமியை காப்போம், இயற்கையை நேசிப்போம். உலகத்தை காப்பாற்றும் மாசுபாடை நிறுத்த ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒரு மரம் வளர்ப்போம்.
மரம் வளர்ப்போம், சுற்றுச்சூழலை காப்பாற்றுவோம். நீர்தான் வாழ்க்கை, நீரை சேமிப்போம், நீர் வீணாக்காது. நாம் நெகிழி பயன்பாட்டை குறைப்போம், மீண்டும் பயன்படுத்துவோம், மறுசுழற்சி செய்வோம். உலகத்தை காப்பாற்று, அடுத்த தலைமுறைக்கு வாழ்வு கொடு. நன்றி. நீங்கள் எங்களை காப்பாற்றினால் நாம் உங்களுக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை தருவோம். நம்ம எல்லாரும் மீண்டும் சுத்தமாக இருப்போம். இன்று நாம் நம் பூமியை பாதுகாத்தால் நாளை நம் பூமி பாதுகாப்பாக இருக்கும். Thank you, Tamil students, for spreading this crucial message. And finally, we have the Spanish citizen presenting two songs, one by the sports section and other by the spells and seasons section. So we now are going to be singing a song called Mejor que ayer. This is an optimistic song about how today will be better than yesterday. This song is by Diego Torres and is one of our Spanish. We learned this in one of our Spanish classes a few months ago, and we've been practicing it ever since. We're singing No Puedo by Paul Alondra, and it's the genre of musical hip hop. Parece corto que lo digo, pero no. Entiéndeme, no lo que estoy. No necesito que vacilo por televisión. Ni cómo hago con mi mente para decirle que los momentos inútiles se quedan enterrados. Ni cómo hago para meterme diciendo que no quiero ver que están en tu cara. Y no puedo sacarte de mi mente, no quiero. Hablar con otra gente sabiendo que siempre he sido tímido.
sempre sido tímido, giro solo cínico para conocer tu puedo sacarte de mi mente, no quiero, hago todo ya antes no eso, que siempre sido tímido, giro solo cínico para conocerme, vamos a verlo, parece tonto que lo diga, pero no entiéndeme, no lo consuelo. No necesito que ha sido conexión. ¿Y cómo hago por mi mente para decirte que en un momento que tuvimos sin que la meta nada? ¿Y cómo hago para meterme diciendo que no quiero verte lo que te en tu cara? Y no puedo sacarte de mi mente, no quiero. Ando en un que sea eso. Que siempre he sido tímido, tío, solo cínico para conocerme. Thank you, Spanish learners, for those delightful songs. Let's give a big round of applause to all the learning done in our languages and to all the teachers who have trained them well. Before we move on to achievements, we have a special performance by one of our grade 6 students. Let's call upon Disha for this. Disha has been learning ballet for 7 years. I'm sure you all would like to know more about it. She will now present a short performance called La Esmeralda. Before that, let's ask her to begin with a brief introduction. Good morning, everyone. I'm Disha, and I'm going to be performing La Esmeralda, and I'm going to be doing the tambourine version. So I hope you enjoy it because Esmeralda is a very graceful and elegant character. That was so beautiful and graceful. We would love to see many more performances like this. We now move on to the Casey Spotlight, where we celebrate the achievements of our students. Today we have with us Siddharth from SS, who was selected for the ISSO Space Olympiad Finals. Siddharth, can we please have you on stage? It was a 3-day event held at the prestigious Indian Institute of Science, IISc Bangalore. Please show your certificates to all of us. Let us now ask him about his preparation. So that we are very proud of your achievement. We would like to know about your preparation for the finals and what is the plan for the future. So after I got selected for the preliminary round, after the results came, I knew I was selected for the finals. So I actually had 2 months to prepare. And I had to learn various
like concepts like cosmology, astrology, etc. But some of them were not for my level. Like some were like grade 10 science. So I had to like use 1 hour each day just to practice. And during the exhibit, famous ISRO scientists such as Ritu Karidal, aka the Rocket Woman of India, they came to give us lectures on the questions that would be asked during the exam. Now we have Daksha Varshita, who won gold medal of distinction in both science and math Olympiad. Daksha, can we please have you on stage? The Science Olympiad NSO was held on 11th December, where she got 72nd place international, and Math Olympiad was on 28th November, where she placed in 73rd national. This is indeed a very proud moment for you, and we do know that you have worked very hard for this. Would you like to tell us what challenges you faced? So during the exam, I faced two main challenges. One was managing my time because I felt that I was taking way too long in only a few questions. And the other one was trying to understand and visualize the hard questions in my head. Can you please show your certificates to all of us? Thank you so much for sharing your incredible achievements with us. Let's give them a huge round of applause. Now we have the section Little Lessons, Big Impact. We have Akshara, Isha, and Samyukta from grade 6 to share about how little lessons can create a big impact. So hello everyone, my name is Aksha. Bonjour, my name is Isha. Bonjour, my name is Samyukta. And we're going to be talking about an experience that we had 2 months ago. So 2 months ago, Alexis Sir's friend, Madame Anne, came to India for her daughter's wedding, and she paid a visit to our class, and we were so excited to speak to a native French speaker for the second time. And it was a very fun experience because we actually understood, and that was a very proud moment for us, since at first we weren't very confident in our skills. So I think the experience, like Aksha said, we were very, very proud after we finished talking to her, because though she spoke in like very slow, simple French, we managed to understand. And the day before, we got time to ask her questions that we wanted to know about French culture and her perspective on India. And it was very enlightening for all of us. Now I'm going to talk about my personal reflection. So at first I was very nervous because I've only been learning French for 9 months, whereas she's a native French speaker. But at the end, I was able to understand what she said, and I was able to reply in simple sentences. I was also really surprised to find out that Alexis Sir and Madame Anne went to the same university, even though they have a large age gap. I think it showed me that age is just a number and learning can happen at any age. Thank you for sharing these little lessons. As we come to the end of today's assembly, we hope you enjoyed exploring different languages and cultures with us. Let's continue to learn, grow, and appreciate the diversity around us. It is now time to show our respect and pride. Let's rise and face the national flag to sing our national anthem. Let's go to lunch. Stand at ease. Attention. Stand at ease. Attention.
conclude, we would like to thank everyone who made this assembly possible. For the arrangements, Jagananna, Madhyana, Shrikananna, Samanna, the facilities. For recording, Selvan and Kodiana. For editing and uploading, Swayamonti. For the music, Paul sir, Jonathan sir, and Hari sir, along with our student musicians, Ayan, Naranacharya, and Mahi. And a special thanks to Vimaster and Tasya Auntie for their constant support. Thank you everyone for your time and attention. Have a wonderful day.